Assalamu alaikum, everyone. Sorry for the delay. I was just trying to set up some things. Okay. All right. So let's start. We have most of the people here already. So okay. So some of you might know we've got some new instructions from HSC, and it looks like most probably you're going to have your exams online as well. तो एंड पे प्रॉब्ली फिजिकल एग्जाम्स नहीं होंगे तो we're trying to see के उसको किस तरह से मैनेज करना है अब and whether the percentage of exam will remain the same or will it change. How are your classes going by the way अभी तक the other courses and this course as well? Any particular feedback that you have regarding how the classes are being conducted? कोई issues तो नहीं आ रहे specifically? Very assignment heavy? Is it this course इश्यूज specifically? सर बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं उसमें से आप पे भी की रिक्वेस्ट है सर हर एक दो दिन बाद दो दिन की असाइनमेंट्स होती है तो काफ़ी बर्डन है काफी ज्यादा बर्डन है बट लेकिन वो असाइनमेंट्स तो मतलब बहुत ही छोटी असाइनमेंट्स आपको सिर्फ वो कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती हैं उसमें इतना टाइम तो नहीं लगता होगा असल व्हाट में इज द सर हम एवरेज टाइम यू टेक फॉर एवरी असाइनमेंट
सर ये डिपेंड करता है असाइनमेंट पे। असल में सर इशू सिर्फ इतना सा है कि हम पहले कॉन्सेप्ट्स को कभी कभार जो नहीं क्लियर हो जाता है डिस्कशन से क्लियर करके फिर असाइनमेंट्स करते थे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स मजीद बिल्ड होते थे। तो हमारे हम्म कॉन्सेप्ट्स इनकम्प्लीट होते हैं और हम जब उसके ऊपर असाइनमेंट करते हैं तो एक गलत हम्म कॉन्सेप्ट ही मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अब इसका क्या करें? अब डेटा कैंप को एक्चुअली मैंने इसलिए इंक्लूड किया था कि दैट अलाउज यू टू रिव्यू सम कॉन्सेप्ट्स एज वेल बिकॉज दे हैव विद सम वीडियोस एज वेल। तो बिफोर यू स्टार्ट एन एक्सरसाइज इफ यू नॉट श्योर अबाउट समथिंग, अगर आप रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं देख सकते उसका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ऑफ कोर्स, तो आप एटलीस्ट वो शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, दे आर लाइक 4 5 minutes ईच। तो उसमें लॉट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर देयर एज वेल। तो दैट्स Sir, व्हाई आई या यस sir, I really like the platform Data Camp is very useful as well. और पर वो मसला ये है कि अब जिस तरह हम क्लास में करते हैं ना, तो initially like in the first few lectures I was able to follow through while using like two screens and do the coding. उसके बाद से वो चीज़ भी नहीं हो सकी। और फिर डेटा कैंप पे मुझे कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आती असाइनमेंट की। आई ओपन इट एंड आई सॉ कि उस पे 4 असाइनमेंट्स थी and then I just had to review everything. और फिर ये कि because you can't follow through during the class और class के lecture भी वो काफी लंबा हो जाता है, तो then you have to watch that video first and वो भी काफी लंबी होती है और फिर उसके बाद आप assignment करने की कोशिश करते हैं। तो all of that like builds up and आई आई जस्ट वो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये था कि पहले हम वीक में एक लैब वर्क करते थे तो इट वाज स्टिल मच बेटर। और अब ये कि इट्स एडिशनल, मतलब सिर्फ आपके कोर्स नहीं और भी कोर्सेज में इतना सारा कुछ हो रहा है एंड इट सीम्स लाइक द कोर्स कंटेंट हैज आल्सो गॉटन मोर डिफिकल्ट स्पेशली विद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप देखें वो तो उसका तो कुछ भी समझ नहीं आता, उसमें भी हम कोडिंग कर रहे हैं। और आर स्टूडियो तो फिर भी हमारी बेस बनी हुई है एंड इट्स सॉर्ट ऑफ फन। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द अदर वन but ये कि it's too difficult to like follow through. So in terms of content, we have not really increased the content a lot. In my course specifically, I've actually removed some of the things, and I've tried to stick to the basics और बहुत ज़्यादा जो है मैं डिटेल में नहीं जा रहा just to make sure कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा burden ना पड़े उस सेंस में। लेकिन अब ये बेसिक्स हम कवर नहीं करेंगे तो ये बेसिक्स में भी अगर हम कुछ चीज़ें निकाल देंगे तो दैट वुड एक्चुअली डिफीट द होल पर्पस ऑफ दिस कोर्स, और आपको जो लर्निंग होनी चाहिए इस कोर्स से वो नहीं हो सकेगी। सो आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कोर्सेज दैट यू वुड हैव स्टडीड अभी तक, और आपको अभी जो आगे भी हमें कुछ चीज़ें कवर करनी है दे आर वेरी यूजफुल, तो आप जो आपको आगे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली काम आएंगी। तो अगर हम इसमें से कुछ चीज़ें स्किप कर दें तो उसमें फिर उस तरह से लर्निंग पॉसिबल नहीं होगी। सो दैट्स एन इशू। Sir, yes, you're right. Like I feel that the course is very important, and honestly, I really like the course as well. I'm pretty sure other people do as well. But अब circumstances इस तरह के हैं, वो या मतलब we're trying, but ये कि for instance जिस तरह आप earlier this week I opened the data camp and there were so many assignments and I just realized that I wasn't able to do any of them because मुझे notification भी नहीं आई और मुझे पता भी नहीं था कि होनी है until like the last day. फिर उसके बाद when you start doing it and then you have to review like all of the concepts. तो अगर तो हफ्ते में एक हो तो फिर भी like हो सकती है, वरना ये कि हर 2 दिन बाद होती है तो वो बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि हर कोर्स में ही अब दूसरे कोर्सेज में कुछ सीपी क्वेश्चंस भी पोस्ट करते थे ना because they have class participation and then there's research based assignments. Even if they are like 1 or 2 pages, then you have to do research and like support it with data, so it takes like 2 3 hours at least to do them. So that for instance, so like I just calculated and we're spending about more than I think 70 hours just on course material with all of the courses, and that is even more than work hours. So it's mother, we don't really have a life at the moment. अच्छा, सो एक्चुअली सम थिंग्स दैट हैव हैपेंड आर कि एक तो आप लोगों के मिड टर्म्स है इस कोर्स में, तो हमारा खैर वैसे भी नहीं था, लेकिन बट फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज यू नॉट हैविंग योर मिड टर्म्स एनीमोर।
तो वो सारी परसेंटेज, वो सारी वेटेज जो है ना वो असाइनमेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एंड वो जो एंड पे आप लोगों को इकट्ठा बहुत ज़्यादा वर्कलोड आता था, फॉर एग्जांपल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द मिड टर्म एंड probably now even for the final exam की शायद उसकी भी वेटेज it will be reduced even more. तो वो जो आपका एकदम बर्डन आता था during the exams, that's spread out across the semester. So that's one thing that has happened. Dusra, for our course specifically, if you think the deadlines are very short, what we can do is we can have one deadline at the end of the week on the weekend, for example, or usme, for example, if we have to cover uh, two chapters from data camp, we can have the deadline the same for both of them, ताकि weekend पे आप लोगों को थोड़ा सा time मिल जाए to submit that. And in terms of the notifications, I actually do tell in class very frequently as well, and ask at the start of the class as well कि आप लोगों ने वो कर लिया नहीं की. तो I think that should not have been a problem. लेकिन email तो बिल्कुल आप I see कि कभी email जाती है data camp से, कभी नहीं जाती, so that's another issue. Yes, but you should definitely try to check uh, data camp frequently, and if you talk to other people in class as well, so you should try to ask somebody, as in अगर आप लोगों के जो बाकी close friends हैं class के अंदर, you should try to ask other people frequently as well कि कोई assignment अभी वहाँ पे है तो नहीं, just to make sure कि कुछ miss ना हो इस तरह से. So yes. सर वो पिछले वीक में आपका जो कोर्स है ना उसका काफी प्रेशर बिल्डअप हो गया था, जिस तरह के आपके कोर्स की 3 चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी एक साथ, जो कि एक स्प्रेडशीट मॉडलिंग पे थी और बाकी 2 आर स्टूडियो पे थी, तो बहुत ना फोकस डाइवर्ट हो रहा था. कभी हम स्प्रेडशीट मॉडलिंग पढ़ने लग जाते थे, कभी हम आर स्टूडियो पढ़ने लग जाते थे, तो ये इस तरह था. देखें उसमें देखें it's also something at your end. देखें वो how देख कितनी देर पहले वो assignment post हुई थी. It had been like 3 weeks. You should have learned by now. You're in your 3rd year and some of you in your 4th year कि आपको हर चीज जो है वो deadline पे नहीं छोड़नी है. So you should have started working on that earlier as well, और आपके पास end पे कुछ थोड़ी सी चीजें रहनी चाहिए थी जिसको आपने changes करनी होती. Because if you look at that overall assignment, it was not very long. आपको सिर्फ एक model build करना था. If you had started working on that earlier, आपका वो deadline पे बिल्कुल end पे सर पे नहीं आता. So आपको उस तरह से चीजें manage भी थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेंगी. Because we're all in it, or we're all in this same thing. बहुत सारी चीजें जो है वो कुछ इंस्ट्रक्टर्स भी लर्न कर रहे हैं और दरमियान में कुछ हमें चेंजेस भी करनी पड़ रही हैं. फॉर एग्जांपल दिस नोटिफिकेशन, दिस recent notification by AGC, this is now again changed things in some way कि आपको जो फाइनल एग्जाम की वेटेज भी थी वो भी अब थोड़ी सी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी. दैट वुड मीन having to give more weightage to assignments. तो उसके हिसाब से फिर ज़ाहिर है असाइनमेंट का वर्कलोड तो शायद नहीं, बट डिफिकल्टी लेवल माइट इंक्रीज इन सम वेज एज वेल. तो आई ट्राई इन दिस कोर्स के जो आपकी डेडलाइंस हैं वो मैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबल कर सकूं और ज़्यादा, ताकि इफ़ यू हैव मिस्ड सम असाइनमेंट्स आप उसको लेट भी अगर सबमिट करते हैं, इट वी will try not to do any reduction in them. लेकिन of course ये नहीं हो सकता कि I was getting some notifications yesterday, I won't name जिनका था वो notification उनको पता चल जाएगा. So somebody submitted lab work 5 and उसमें लिखा रहा था only 43 days late. Now that's not acceptable, right? अब ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है 2 महीने पहले की चीजें आप सबमिट कर रहे हो. But yes, okay, if there is a delay by a couple of days, then that's reasonable. That's okay. I'll accept it for the data camp assignments. That's okay. Yes, Abdul Wasit and Akram. सर ये असाइनमेंट्स में ये वीडियोस तो फिर भी 4-5 मिनट की होती हैं और असाइनमेंट्स की लेंथ भी आप सही कह रहे हैं इतनी नहीं होती, लेकिन कंसिस्टेंसी कोई नहीं आ रही. इसमें काफी रैटिक काम हो रहा है कि ये हम पहले हम इंट्रोडक्शन टू आर करते हैं, उसके हम 4 चैप्टर स्किप कर देते हैं, फिर उसके बाद हम ये डेटा मैनिपुलेशन पे डीप लेयर पे आ जाते हैं, लूप्स वगैरह भी स्किप हो गए.
फिर हम ज्वाइनिंग डेटा पे आ गए, वो तो हमने क्लास में मतलब डिस्कस भी नहीं किया हुआ, तो वो सारा हमें खुद से सीखना पड़ता है। तो ये मुझे मतलब कंसिस्टेंसी सी नहीं नजर आ रही कि हम कैसे इसको साथ लेके चलें। Okay, so Abdul Wasid, the purpose of this course is not to learn R. The purpose of the course is to learn about analytics, data analytics. अब data analytics में कुछ चीजें जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो useful हैं या required हैं, तो हम उन पे focus करते हैं. For example, working with loops is not really required because वो programming आप ठीक है, आप बहुत कुछ advanced चीजें करनी है, आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है. But for our purposes, we do not really need that. तो इसलिए हमें वो चीज़ें कवर करने की जरूरत नहीं है. वो जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू आर में वो सब चीज़ें कवर कराई हुई हैं, लिस्ट्स, लूप्स, conditional statements, and all that stuff. Yes, if you want to learn R itself, that's good. आप कर सकते हैं खुद से, but that's not part of this course. इस कोर्स में हमारा जो eventual purpose है, we want to use R as a tool to do analytics. The purpose is not to learn R. कि हमारा पर्पस ये है कि हम किस तरह से विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं, किस तरह से डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कर सकते हैं, किस तरह से बाद में भी हम देखेंगे मॉडल्स बिल्ड कर सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स जो जिसको यूज करके हम प्रेडिक्शंस कर सकें फॉर द फ्यूचर एंड थिंग्स लाइक दैट. सो द पर्पस इज नॉट टू लर्न आर, द पर्पस इज टू डू ऑल दैट स्टफ यूजिंग आर एज अ टूल. तो हमें आर की सब चीजें आना जरूरी नहीं है. That's why we're ठीक है skipping सर, ये some क्लीनिंग things डेटा and जैसे separating. कोर्सेज हैं ये भी हम कर रहे होंगे, क्योंकि ये भी मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। If you want to do it yourself, you are welcome to do that. लेकिन ये आप इस पे assess नहीं होंगे इस course के अंदर, ठीक है? So सर cleaning, MIS में भी so cleaning data सर is definitely one very important thing. तो हमने deep line में जो कुछ चीजें cover की हैं, you can use some of them to do that. For example, आप missing values कैसे fill कर सकते हैं. So that's mainly the most important thing. अब missing values कैसे fill करते हैं और data को थोड़ा सा standardize कैसे करते हैं कि अगर जो है for example एक variable है, categorical variable है, एक ही column के अंदर उसको दो different spelling से लिखा हुआ है, for example, how do you correct that? So these sort of things, yes, they are important for learning machine learning. लेकिन जो है since the time we have in the course is limited, we are assuming that we already have a cleaned data set and then we're working on top of that. So yes, most real world data sets you will need to do some sort of cleaning before being able to work with them, and we'll discuss what some of those cleaning steps could be. But how you can do that, वो आप लोगों से कुछ चीजें हमने ऑलरेडी एक्सेल में कवर की हुई हैं पहले. आप फिल्टर्स लगा के किस तरह से वैल्यूज चेंज कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं. अगर आप आर में करना चाहते हैं, दैट्स आल्सो पॉसिबल यूजिंग द डीप लायर लाइब्रेरी, लेकिन आप उस पर असेस नहीं होंगे. सो एनीथिंग दैट वी हैव नॉट कवर्ड इन क्लास, you will not be assessed on that. ठीक है सर, थैंक यू। Yes, Sir, so how long do we have access to data camp? you have access to it for the next 6 months, so next for 5.5 months now. So yeah, Okay. so in total 6 months. So you can work on that in the summers as well, so you can make use of that resource. सर हमारे पास और भी कोर्सेज का एक्सेस होगा इसमें? You can try to search for the other courses. अगर आपको उसकी access नहीं है तो you can let me know कि आपको किस course की access चाहिए, and I can do it from my end as well. लेकिन मेरा ख्याल है शायद आप वैसे ही access कर सकें. आप ऊपर search bar में लिखेंगे कोई भी course का, you should be able to access that. अगर नहीं होता you can let me know और मैं आपको उसकी access दे दूंगा. Okay. So let's start our today's session formally. So can you see my screen? Let me just confirm when I share kiya hua ki nahi. Yes, so I've shared my screen. You should be able to see my RStudio window. So we started with plotting last time. So I have not posted the ggplot assignment yet because अभी वो एक joining वाली due थी. उसमें आपको कोई problems आ रहे हैं तो we can discuss them at the end of today's class as well. जिन लोगों ने वो start कर दिए. Otherwise जो है I'll also be extending the deadline for that assignment. So that will be due by Monday, I think. Yeah, so right now it's due by Saturday.
I'll extend it to Monday, और जो ggplot वाली मैं post करूँगा, it will be due by the end of next week. Okay. Now let's look at some of the stuff that we were working on yesterday. So Abdul Basit, you have your hand still raised. You want to say something? Okay, so points representing colors. Okay, so we were here yesterday when we saw how we can apply transparency to some graph. So for example, if I look at this graph, जो मैंने plot किया था, so let me do it without the transparency first. So a lot of time what happens is इसमें तो हमारे पास data points सिर्फ 400 है, so it's still not that big of a problem. But when you have a very large data set, for example, आपके पास thousands of rows हैं or hundreds of thousands of rows का data है, then you have a lot of clutter in these points. आपके पास बहुत सारे points होंगे और वो इतने ज़्यादा overlap कर रहे होंगे, they'll be on top of each other. आपको पता नहीं चलेगा कि exactly वो एक एरिया के अंदर कितनी डेंस जो है वो डेंसली जो है वो पॉइंट्स अपेयर हो रहे हैं, तो वो आप उसको वहां से नहीं कर सकेंगे. तो व्हाट वी डू टू काउंटर दैट इशू इज कि हम ये ट्रांसपेरेंसी यूज करते हैं to basically have a look at that overlapping data a bit more clearly. जहाँ पे आपके overlaps ज़्यादा आ रहे हैं, आपको वो दोनों colors वहाँ पे नजर आ रहे हो. So this is one way to have a look at those overlapping points. आप इसकी transparency को change कर सकते हैं. So 0.7 को let's say अगर मैं 0.7 means ये 0.7 70% it will be visible and 30% is like opaque. So I can change this to another value or ज़्यादा light हो जाएगा. If I change it to let's say 0.2, it will only be 20% visible तो और आपके points बहुत ज़्यादा dim हो जाएंगे. So you can try to experiment with this and see what works best for you, what exact percentage works best for you. So this is one way to do it. Another way we can use here is आपके पास जो यहाँ पे ऊपर points हमने plot किए हैं, these points here, ये एक specific default shape है जो ggplot use करता है for plotting these scatter plots. जो circle आ रहा है, इसका एक default size है और एक default shape है, right? What you can do is you can also change this shape in a way. So right now these are solid circles, right? Acha, by the way, there is one person trying to join the class for quite some time, और उनका नाम यहाँ पे आ रहा है Galaxy A20. अब if anyone of you knows this person, आप उनको please कह दें कि you'll have to change your name so that I know who you are. Otherwise, you'll not be able to get into the class. Acha. So what you can also do is geom point के अंदर by default आपके पास एक shape है जो ये solid circle है. By default इसका एक shapes के numbers हैं. You can try to look for these 1 से लेकर 20 तक. अगर आप ये numbers change करें, these shapes will keep changing. Default ये जो shape यहाँ पे show होती है, this is numbered. इससे आप ये solid circle represent करते हैं. If you change this number to 1, तो ये 1 number represent करता है a hollow circle. So it will look like this. So if I remove transparency from there and I run this, I'll have these hollow circles without any kind of transparency. This is another way to look at those overlapping points. जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा clutter है किसी area में, you can use these hollow circles to get a better sense of the data. All right, so आप यहाँ पे shape का attribute, shape argument input कर सकते हैं geom point के अंदर. Okay, that's another thing you can do. All right. Now, one other thing, one other idea for
basically taking care of this overplotting in such scatter plots. इसके आप एक ही आर्गुमेंट है पोजीशन आर्गुमेंट जो बाय डिफॉल्ट तो आपका होता है कि जहां पे भी ओरिजिनल पोजीशन है वहीं पर वो शो करता है, लेकिन देयर इज अनदर आर्गुमेंट कॉल्ड जिटर. अब ये जिटर क्या करता है? जिटर बेसिकली changes the positions of points just a little कि वो एक दूसरे को overlap ना करें. So if you were to look at individual points in that sense, for example, अगर मैं कहता हूँ कि if I plot, for example, can you see my cursor moving, by the way, on your screen? Yes, sir. Okay, so you can. So agar let's say I run that original thing again. Now this point here, let's say this red point where my cursor is, ये इस point की original position है on the scatter plot. ठीक है? Similarly, अगर मैं यहाँ पे कुछ और जगह पे जाऊँ, यहाँ पे if you look at this point, this position here, जहाँ पे मेरा cursor है अभी, you see a blue dot, and behind that I can see कि शायद एक red dot भी है जो इतना visible नहीं है. अब देखें exactly एक दूसरे को overlap करें. Now, if I use this position equal to jitter argument here inside geom point, ये क्या करेगा? It will change the position of this point a little. So मैं यहाँ पे इसको run करता हूँ. ये इन पॉइंट्स की पोजीशन को हल्का सा चेंज कर देता है कि वो ओवरलैपिंग का इशू थोड़ा सा कम हो जाए, कि उन पॉइंट्स की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देगा. सो इफ आई वर टू बेसिकली कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ टू दीज टू प्लॉट्स, आप देखेंगे पॉइंट्स की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो रही है. सो दिस वाज द ओरिजिनल, दिस इज द न्यू. ओरिजिनल, न्यू, ओरिजिनल, न्यू. तो वो जिटर क्या करता है? पॉइंट की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज इस तरह से करता है कि आपको जहां पे वो डेंस एरियाज हैं वो ज्यादा आपको विजिबल हो जाते हैं. नाउ दिस इज अगेन नॉट वेरी विजिबल इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, बट व्हेन यू वर्क विद a larger data set, it's going to be much more useful. So this is one, these are three different things that you can use for overcoming this overlapping issue in large data set, कि आपके points जो एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं उनको थोड़ा सा उनकी visibility थोड़ा सा improve करने के लिए. Excuse me, sir. Yes, Talha. सर आप बता सकते हैं shape equals to 1 क्या करता है? Okay, so shape, so by default जो आपकी यहाँ पे shape argument है उसकी value इसके अंदर 16 होती है, and ये 1 to 20 basically numbers हैं जो different shapes को represent करते हैं ggplot2 के अंदर. 16 shape is basically this solid circle that you are seeing here on the plot right now. ठीक है? This is the default. If you change it to 1, it will make it a hollow circle. So 1 represent करता है hollow circle. You can try the other numbers. Let's say मैं 3 को try करता हूँ. That's going to be another kind of shape. ये इस तरह से देखें, ये plus signs आ रहे हैं. So 1 से लेकर 20 तक ये different shapes हैं basically जहाँ पे आप उनको change कर सकते हैं. ठीक है? Okay, sir. Thank you. This hollow circle is one other possibility that you can use. Jalid, you want to say something? No, sir. Okay. Your mic was unmuted. Okay. So now what we can do is so once we have built this plot like this, हमने कुछ भी plot इस तरह से बना लिया. Now we can also change some of these aesthetics. तो आपको एक तो आपने देख लिया कि अच्छा हमने data क्या input करना है. Now you want to make it a bit presentable, right? Right now, for example, in this case, what you can do is you can try to play around with these labels on the axes. You can try to change the intervals on the axis. For example, अभी यहाँ से 0 से 200 तक axis है, आप इसकी range change कर सकते हैं. You can do this sort of stuff. अब इसके लिए कुछ आपके पास functions होते हैं in ggplot2 और वो उसको हम कहते हैं scale functions. These are called scale functions. तो अगर आप scale मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो you'll see a lot of these options है कि आप यहाँ पे alpha की value को change कर सकते हैं. So the scale is basically used to modify some aesthetic. So अभी जो हमने यहाँ पे ऊपर use किया है, अभी हमने कुछ values तो specify की हैं कि अच्छा
x के अंदर we want the price variable, y axis पे we want the unit sales, we want the color to be chosen based on the shelf location. कुछ और बाकी सारे जो आर्गुमेंट्स एस्थेटिक्स के होंगे वो डिफॉल्ट जो है जो भी ggplot2 के अंदर डिफाइंड है वो सारे डिफॉल्ट पे चल रहे होंगे. सो स्केल हम यूज करते हैं टू मॉडिफाई सम ऑफ दोस आर्गुमेंट्स. तो आप स्केल अंडरस्कोर लिखते हैं अपने आर स्टूडियो के ऊपर, you will see all these different functions that you can use. So for example, scale alpha can be used to change transparency. Scale color में आप जो है वो gradient colors use कर सकते हैं. आपको अगर for example ये तीन colors की बजाय आपके पास gradient हो के light, for example if we're talking about blue, you could have a light blue, a bit darker blue, and then a very dark blue to represent three different colors. उस तरह से तो आप colors को change कर सकते हैं. Then you can do some other things like fill. These are two different things. So color is basically used to define this outline होता है shape का. जो fill होता है that is basically the color that shape is filled with, जो अंदर interior का color होता है. Then you can change the line type. For example, when we come to the line graph, subline, or even in this case, if हमने best fit line बनाई थी, you can change how that line appears. So by default, it's a solid line. You can change it to, for example, a dotted line or something like that. Then you can have, you can change the shape, you can change the size, you can change what appears on the x-axis, you can change what appears on the y-axis, and you have all these options available here. So anything that you want to change here, आप इनमें से कोई फंक्शन यूज करके उसके आर्गुमेंट्स देख सकते हैं कि क्या आर्गुमेंट्स यूज करने हैं to change that particular thing. So and basically anything that you can think of. And if, of course, the first time or the second time you try to do it, you would not be able to do it directly without some help. तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, for any particular function आप उसको I would recommend आप जाके सिर्फ Google करें. You can get information from websites there. So for example, एक आपके पास बहुत सबसे ज़्यादा यूज होती है that Stack Overflow. वहाँ पे आपको almost हर तरह की चीज़ के आंसर मिल जाएंगे. So more than the help files, I would recommend आप उसको Google कर लिया करें, and that's going to be much quicker. So in this case, for example, we can experiment with some of these things. And for example, इस case के what I can do is I can change. What I can do is this the title right now it's appearing as price underscore USD. Let's say I want to change it, और मैं इसको इस तरह से करना चाहता हूँ because I think that this is more presentable. Price और आगे bracket में मैंने ये dollars लिख दिया. So I'll use scale x function for this. अब इसमें scale x के भी आगे, if you saw earlier, option scale x so you understand what a continuous variable is. Whether you're working variable, these are all the names of the same thing: discrete, factor. So उसमें आप ये scale x discrete use करना होता है. In this case, on the x-axis here, ये price एक continuous variable है. We'll be using scale x continuous variable, continuous function for this. Okay, so we start this. The first argument is always going to be this label. So अब label को मैंने change किया. I want this label instead, price और आगे bracket dollars. Then here as well, एक आपके पास limits का argument होता है axis वाले के अंदर. And limits basically define in the vector कि आपका minimum होगा axis पे और maximum point क्या होगा. So if I define, for example, 0 से लेकर 250 तक values चाहिए on the x-axis, I can use this argument like this, limit
limits is equal to C और आगे bracket पे 0 to 50. And then what I can say breaks equal to this, and what this does is this tells R कि आपने इसके अंदर जो smaller boxes हैं ये आपने breaks कितने पे देने हैं. For example, right now it's 50, 100, 150. So 50 का interval है. Let's say I want to change this interval to 25 instead. ठीक है, मैं इसको 25 पे change करना चाहता हूँ. So अच्छा मैंने नीचे 225 लिखा हुआ है. Let's change it to 250 as well. तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? You use this breaks argument, और breaks के अंदर you use this sequence function. Sequence के आगे arguments होते हैं, and these three arguments basically tell us like this. So let me show you what this means. ये मैं आपको यहाँ पे अलग से function करके दिखाता हूँ. Sequence function के तीन arguments होते हैं. The first argument value, the last argument is the maximum value, and then this third the second is the maximum value, and the third argument, the last argument is कि आपको intervals कितने numbers के बाद चाहिए. So for example, if this last argument is 25, five का interval चाहिए. So your first value has to be 0 in this case. के पास देखिए नीचे result आ रहा है. It means 0, 25, 50, 75, 100, 125 and so on. तो ये sequence function ये सारी values generate करता है. ठीक है, तो breaks में मैंने यहाँ पे sequence function apply कर दी. आप ये सारी values अलग से इस तरह vector की form में भी लिख सकते थे, लेकिन this is much easier कि आपने एक function लगा दिया है सिर्फ, and that generates these values 0 से लेकर 250. So when I run this thing now, with before that plus sign, अगर मैं इसको run करता हूँ, you will see my graph changes a bit. So अब यहाँ पे x axis पे I have values from 0 to 250. Breaks भी देखें, मेरे पास 25 के बाद breaks आ गए, और इसी तरह से जो x axis का title था that has also changed now. ठीक है, price dollars. इसी तरह you can do the same thing for the y-axis as well. उसमें आपको scale y continuous use करना पड़ेगा, and then you can use you can change these arguments similarly. Now in this case, for example, or in any case, आपके पास एक और option भी होती है. Excuse me, sir. Yes, Ara. सर ये रन कर रहा है लेकिन ये ग्राफ बदल नहीं रहा, ये रन कर रहा है लेकिन ग्राफ और चेंज नहीं कर रहा. रन भी इस तरह से कर रहा है कि अगर ये थीम को मैं ना रन करूँ तो ये सही चल रहा है, लेकिन अगर थीम जो आपकी आखिरी आर्गुमेंट है अगर इसके साथ करूँ तो एरर आ जाता है, लिमिट्स के अंदर एरर आ रहा है. लिमिट्स के अंदर एरर आ रहा है. बट अगर थीम के बगैर करूँ तो वो रन हो रहा है, बट ग्राफ नहीं बदल रहा. Okay, so just take care of the plus signs. अगर उसमें तो कोई इशू नहीं है. सो मैंने सारी सारा चेक continue हो किया, रहे हैं next एग्जैक्टली line पे. आपकी तरह ही लिखा है. Okay, but how would I understand कि ये क्या हो सकता है? You can try to work with Abu Bakr for a while then to try to debug this issue. Abu Bakr, are you there? जी सर. Abu Bakr, please इनके साथ chat पे देखें कि क्या issue आ रहा है. ठीक है सर. Yes, Jaleed. Sir, what is the plus sign for? Okay, yes. So अभी मैंने इसको run नहीं किया, so अभी you only need to run this. ठीक है, plus sign अभी run नहीं करना है, so only run this thing. Are you talking about this plus या फिर ऊपर वाले को भी पूछ रहे हैं इसका? Sir, both. Okay, so did you miss the last class? No, sir, I was there. Sir, So ggplot जिस तरह हमारे पास dplyr के अंदर remember ये एक chain operator होता था, percentage this greater than sign then percentage. ggplot2 के अंदर this plus is a chain operator. So ये every function after this plus sign is a new layer that we are adding to this graph. So for example, ggplot2 इसके अंदर हमने सबसे पहले define कर दिया कि data क्या use करना है, x और y axis पे क्या input करना है.
उसके ऊपर हम एक और लेयर ऐड करें कि वी वांट geom point, और उसके ऊपर एक और लेयर ऐड करें. So ये एक chain operator है, and you can add as many functions to this using the plus function as you want, this plus sign as you want. ये chain operator है, like पास वो percentage sign होता था dplyr के अंदर. Okay, Yes, sir. Azhar? Thank you. Okay. So when we run this, we should see something like this. And now also change what the background in a sense. अभी आपके पास देखें सारे graphs के अंदर the background is gray और आपके पास ये white lines आ रही हैं. तो I can add another function to this. यहाँ पे plus add किया मैंने, और मैंने next line के अंदर ये theme function add किया. Theme के अंदर भी आप देखेंगे आपके पास बहुत सारी अंडरस्कोर, थीम अंडरस्कोर के बाद देखेंगे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ब्लैक एंड वाइट, क्लासिक, डार्क, ग्रे, लाइट एंड सो ऑन. और इस हर फंक्शन के अंदर आपके पास बहुत सारे आर्गुमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं जिसमें आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल आई कैन ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद BW, and what that does is that changes the background to this black and white background. So वो gray color खत्म हो गया. इसी तरह if I were to change it to light, for example, let's see what that does. अच्छा, light में इस case में ज़्यादा difference नहीं आ रहा, but it does make some difference in some other cases. Classic में देखते हैं, classic में क्या होता है. So we don't have those lines anymore as well. So you can try to experiment with these different themes that are available, और backgrounds को change कर सकते हैं, और फिर इसके अंदर कुछ के अंदर आप और भी customize कर सकेंगे. You can try to look at the help functions if you are interested in looking at this in more depth. ठीक है. So theme function हम use कर सकते हैं to change our background. Now we have only worked on scatter plots अभी तक, ठीक है, लेकिन scatter plots में हमने देख लिया है कि किस तरह से हम बहुत सारी चीजों को change कर सकते हैं. Now let's say if we were to make other types of visualizations. So remember when we started, we said आपके पास ये कुछ essential functions होते हैं जो आप यूज करते हैं. So you had the data, और अभी तक हम जो ज्यादा काम कर रहे हैं वो aesthetics को यूज कर रहे थे, और geometry हमने अभी तक सिर्फ scatter plot यूज किया, geom point यूज किया अभी तक हमने सिर्फ, और हम ये scatter plots यूज करें. Now let's try to change this geom function a bit as well, and let's try to build some other visualizations जो हम Excel में करते थे. For example, a bar chart, a histogram. तो हम वो देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं. Now, there are actually many different visualizations that you can do in ggplot2. In fact, right now, there are 37 different possibilities. For example, this geom point tha, is tarah se you have 36 other types of graphs available. Of course, not many of them are used very commonly. तो हम सिर्फ यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा commonly use होते हैं, bar charts, line graphs, histograms, we are only concerned with that for now. So first of all, let's start with a histogram. So histogram क्या करता है? Histogram basically, if you remember quantitative methods class or from your earlier FSC or A-level, histogram basically bins your data in different categories. So आप एक continuous data को अगर आप उसकी distribution check करना चाहते हैं, for example, unit sales को if I want to see कि unit sales किस हैं across stores के let's say अगर मैं देखना चाहता हूँ 0 से 500 के दरम्यान में कितने stores हैं, 500 0 से 500 तक जो unit sell करते हैं कितने stores हैं ऐसे, how many stores do we have that sell between 500 to 1000 units on average, how many stores do we have that sell between 1000 to 1500 units on average, and so on. तो हम इस तरह से bin कर सकते हैं data को. So let's try to run this argument. So let's try to do this first. So remember histogram आप हमेशा कब use कर सकते हैं?
करते हैं ओनली फॉर वेरिएबल्स, ठीक है। आप इसको डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए नहीं यूज कर सकते, यू ओनली यूज दिस फॉर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। अब इसके अंदर इनसाइड योर ggplot फंक्शन you only have to give what you need to put on the x-axis, but because on the y-axis you're always going to have count as the default. अभी मैं इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ. So let's say I keep it very simple and ggplot के अंदर first argument मैंने data input कर दिया, then I have the aesthetics function जिसके अंदर मैंने x-axis पे unit sales put करना है, वो मैंने input कर दिया. And then I use the plus sign and I use geom histogram instead now. Instead of point, I'm using geom histogram. And let's see what I see out of it. So जब मैं इसको run करता हूँ, I see something like this. So देखिए इसने कुछ default जो है bins use करके ये मुझे ये result show कर दिए. So by default ये देखें यहाँ पे नीचे आपको क्या show कर रहा है output के अंदर. It's using bins equal to 30. So by default जब भी आप histogram बनाएंगे, it's going to give you the number of bins equal to 30. So 30 bins यानी 30 इस तरह से ये bars आपको show कर देगा. अब जितना भी data है उसको 30 bars में divide कर देगा. Sometimes it's a good choice. Sometimes you want to customize it a bit, और आप इसको bins को change करना चाहते हैं. So for example, in this case, let's say मैं इसको specify करना चाहता हूँ. अब क्योंकि अभी मुझे नजर नहीं आ रहा कि exact bin की width कितनी है. I don't know कि ये 0 से लेकर ये यहाँ तक जो value है ये कितनी width है exactly. तो मैं specify कर सकता हूँ कि मुझे width क्या use करनी है. So I can use this argument called bin width inside geom histogram, और मैं इसको define कर सकता हूँ कि I want the width to be equal to 500. So that's now going to show me data from 0 to 500, 500 to 1000, and so on. So if I try to run this, the width will now change, and now I will know कि ये जो हर bar है, this is for an interval of 500. ठीक है? So I can see the distribution of my data. They are most of my stores are selling between let's say this is around 3700 or something. So between 3700 units, and if we stop here, and 10,000 units. So between 3500 and 10,000 units, most of my stores are selling between these numbers. जो उनकी average unit sales हैं वो इसके दरमियान में. ठीक है? So this is how you can build a histogram here. अब इसमें वो देखें जो ऊपर हमने चीजें डिस्कस की हैं, all of them still apply. आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपको लेबल यहाँ पे लेबल चेंज कर सकते हैं, इसकी स्केल चेंज करने y एक्सिस पे x एक्सिस पे वो चेंज कर सकते हैं. All of that is possible. That's why this chaining is so useful कि आप कोई भी फंक्शन यूज करके वो सारी चेन अप्लाई करके इसका बाकी फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, साथ आप ये थीम भी चेंज कर सकते हैं, and all of that is possible within along with these functions as well. So this is one possibility कि आप histogram बना सकते हैं. And then let's come to a more familiar thing. Yes, Azhar. SEQ को प्लीज एक दफा रिकैप कर दो. Sorry, Azhar, किसको? ये सीक्वेंस आई थिंक इसका नाम जो फुल. Yes, sequence. Yes. So अच्छा, so sequence function हम देखते हैं क्या करता है. Sequence के आपके 3 arguments होते हैं. So if I run the help function here, अब ये देखें राइट साइड पे देखें, मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं. हेल्प वैसे इतनी आसान नहीं होती for somebody who is not used to programming, लेकिन ये जो आपके arguments शो कर रहा है, ठीक है. देखिए from argument है एक, जो इसका starting value होगी कि आपने start कहाँ से करना है. 2 argument है, and 2 will tell you कि आपका जो है last number क्या होना चाहिए, ठीक है. So this is the first argument from, this is the 2 argument. अब यहाँ पे for example
फ्रॉम का मतलब है हमने 0 से स्टार्ट करना है, टू हमने 250 रखा है, हम लास्ट नंबर 250 होना चाहिए. द थर्ड आर्गुमेंट दैट वी आर यूजिंग इज बाय, कि इंक्रीमेंट कितना करना है, राइट. सो दैट्स 25 here. So 25 के इंक्रीमेंट्स पे हमें वैल्यूज चाहिए from 0 to 250. So if I run this, you see this at the bottom, 0 से लेकर 250 तक वैल्यूज हैं at 25 का इंक्रीमेंट. Is that clear, Azhar? Yes, sir. Okay. So let's come back to this. हमने अभी देखा कि histogram कैसे build कर सकते हैं. Now let's come to a more familiar thing, and that's bar या जो column chart जो हम Excel में बनाते थे. उसके लिए we have this function called geom bar inside ggplot. So geom bar क्या करता है? It makes bar charts. So let's try to experiment with this now. So again we start with the same function ggplot. उसके अंदर हम बताते हैं हमें data set कौन सा use करना है, and we want to put on the x-axis and so on. So let's say अभी मैं कुछ भी और नहीं करता. So let me keep it simple first. So I only have this one argument. So color को भी remove कर देता हूँ. So let's say I'm only using this argument for now. So ggplot car seats. So I have ggplot car seats underscore df aesthetics x equals shelf location plus geom bar. So what I'm doing here is I'm inputting this data inside, और aesthetics में उसको बता रहा हूँ कि मुझे x axis पे shelf location चाहिए, ठीक है, and I want to create a bar chart. So that's the minimal information possible. आपको x axis specify करना पड़ेगा in any case. Let's try to run this and see what we get. So when you run this, what we see is this chart here that's showing us by shelf location the number of stores that are there. So total 400 stores there, remember. So it's just counting the number of rows for each of these categories. So it's showing me कि bad shelf location पे कितने stores हैं, as in how many stores are there that have bad shelf location, how many stores are there that have good shelf location, similarly how many stores are there that have medium shelf location. And then what we can also do is we can add some other arguments to it. We can say we want to color these by some arguments. So अभी देखें, अभी तो सिर्फ उसने अलग-अलग show कर दिए bad and medium. So what we can do next is we can say let's add the US variable to it, and I want to see how this distribution is across all those 6 categories. कि मुझे shelf location और भी मिल जाए साथ, और उसके साथ I can also see whether the store is located inside US or not. So in this case, if I से क्या मुराद है आपका? मतलब 3 shelf locations and 2 from US कि US में है या उससे बाहर है, तो total आपके पास 6 categories बन जाएंगे ना, 3 multiplied by 2. Let's try to run this, you'll understand. So if I run this, I get something like this. So any idea what this means? आपको क्या लग रहा है इससे, ये क्या ग्राफ शो कर रहा है? सर लेजेंड के मुताबिक तो ऊपर वाला पोर्शन नो दिखा रहा है और नीचे वाला पोर्शन यस दिखा रहा है बार से, वो सेगमेंटेड लाइन से. Think about it again. It's the other way around. नीचे वाला पोर्शन नो दिखा रहा है, ऊपर वाला यस दिखा रहा है. Is that what you said? नहीं, ऊपर वाला नो और नीचे वाला यस. No. So from the legend you see the border of no is red and the border of yes is blue. Sir. So ऊपर yes Azhar. सर ये जो बैड सेल लोकेशन है इसमें 50 से थोड़ा सा नीचे और 100 से थोड़ा सा नीचे जो जितने एरियाज हैं ये यूएस के अंदर थे, जो बाकी हैं वो विजिबल नहीं थे इतना, जो बाकी हैं वो यूएस के बाहर थे. Yes. So basically it's not very visible here. So that's the point. So why is that happening? Because remember मैंने आपको भी बताया था color जो argument है ना, ये scatter plot के अलावा in all other cases it's only going to define the border of a figure. ये आपकी outline का color होता है, ठीक है, ये आपकी हमेशा
आउटलाइन का कलर होता है. So Right. this is not always recommended क्योंकि आप जहाँ से आपको देखो बहुत मुश्किल हो रही है to identify what this represents. So color की बजाय what you can do is you can use this fill function. So let's change in that, उसी के अंदर करते हैं. So इसको हम fill कर देते हैं. ठीक है, अब fill करेंगे. This is going to be easier to read. और ये आपके कलर्स के फिल चेंज कर दिए, उस बार्स के उसने जो इंटीरियर का कलर है वो चेंज कर दिया. नाउ इट्स इजियर टू रीड. सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस चार्ट नाउ? व्हाट काइंड ऑफ चार्ट इज दिस? अगर आप एक्सेल की टर्म्स में देखें, बार चार्ट्स नॉर्मली इस तरह तो नहीं बनाते थे हम. ये कौन सी टाइप है उस बार चार्ट की? स्टैक कहते हो? यस. सो एक्सेल में आपके पास जब आप डिजाइन में जाते थे, शायद या चार्ट टाइप में जाते थे, आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती थी स्टैक्ड बार चार्ट. सो इट्स बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ दैट. सो स्टैक्ड किस तरह से है कि यूएस में है या नहीं है, दे आर बोथ अपीयरिंग ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. फॉर एग्जांपल यहाँ से से लेकर समवेयर अराउंड 30 वी हैव नो हियर, एंड देन 30 से ऊपर to until about 95 आपके पास वो स्टोर्स हैं जो यूएस के अंदर हैं. सो इट्स अ स्टैक्ड बार चार्ट. ये एक दूसरे के ऊपर शो हो रहे हैं इस तरह से. ठीक है. सो बाय डिफॉल्ट जब आप ये geom bar फंक्शन यूज करेंगे, it's always going to use it's always going to make a stacked bar chart for you by default. ठीक है, that's the default. अब इसके अंदर different options available हैं because this is not the most common chart that you would generally be using. आपके पास ये options होती हैं. So let me hide the other stuff ताकि आपको इससे confuse ना हो. Okay. So आप क्या कर सकते हैं? आप एक position argument use कर सकते हैं. By default ये क्या होता है? By default this argument is stack. तो अगर आप इसको stack भी डाल दें इसके अंदर, it's going to show you the same graph because that's the default. ये default इसकी value होती है. However, you can change this position argument inside geom to some other values. हम इसको ये कह सकते हैं, एक possibility is आप इसको fill कर दें. ठीक है. Let's try to run this and see what we get. So any idea what this means now? What kind of chart is this? Anyone? स्टैंडर्डाइज हो गया. क्या है कि अगर बैड देख रहे हैं तो Yes. बैड में कितने % नो है, कितने % यस है. Yes, so we're talking about percentages here. So bad के अंदर we have about so when you have a shell location of bad, तो हमारे पास जो number of inside the US, in fact outside the जहाँ पे no है वो red वाला show है, that's about let's say this is 20, so that's about 35%. ठीक है, 35% stores inside the US ऐसे हैं. In fact, out of all stores जिनमें bad shelf location है, उसमें 35% are outside the US and the rest of 65% are inside the US. Similarly, out of all the stores that कोडिंग है have ब्लू good, ऊपर है. सर right? मेरे वाले के अंदर ये जो ब्लू है ये नीचे आ रहा है और रेड ऊपर आ रहा है, ये किसी कोड की वजह से या वैसे ही इस तरह हो रहा है? सर मेरा भी ऐसे ही है. ऐसे ही हो रहा है. और सर ये geom bar के That's अंदर okay. जब आपने fill किए बदल नहीं रहा, मेरा exactly same है. Position लिखा हुआ है नहीं, कि unknown parameters. position unknown parameter geom bar के अंदर आपने ये inverted commas के अंदर fill लिखा है, Yes sir. double quotes के अंदर, right? हाँ जी सर. सर चले वो तो फिर इतना बड़ा इशू नहीं है. मुझे ये बताइए हमारा ऑपोजिट क्यों आ रहा है आपसे? तो एक ही बात है वैसे. That's fine, that doesn't matter, उससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता. आपके हमारा आप legend देखें ना साइड, आप साइड पे legend सर देखें, आपका legend उसके लेजेंड हिसाब से आपके होगी. मुताबिक है लेकिन रिजल्ट ऑपोजिट है. हाँ जी मैं भी कह रहा हूँ. जी बिल्कुल. इससे रिजल्ट सेम आ रहा है, असल में बस रेड ऊपर शिफ्ट हो गया और ब्लू नीचे, तो आपकी अमाउंट Yes, सेम शो होती है. yes, that's fine, लेकिन that's यस not की a अमाउंट problem.
आप देखें ना, yes for example in the first case bad shell location के केस में just verify जो yes वाला portion है is that big yes yes वाला है yes sir on yeah so then it's सर fine लेकिन जब हम काउंट कर रहे होंगे जिस तरह हम इसके पोजीशन की आर्गुमेंट से के बगैर कह रहे थे yes उसमें इशू तो नहीं होगा सर जब हम सिर्फ काउंट्स देख रहे हैं so if we change it back to stack या उसको default पे रहने देते इसमें भी वही the number of yes should be greater तो आपके पास देख लें अगर आपके पास yes जो है वो बड़ा शो हो रहा है तो then it's fine ओके सर और Okay. दूसरा ये कि सर ये काउंट ये रेंज तो नहीं दिखा रहा किसी तरह की या बस ये सिर्फ रेशियो है आपस में रेंज क्या मतलब जैसे अगर ये नीचे नहीं सर ठीक है इट्स ओके Okay, so a lot of times what you actually need is कि ये side by side bars show हो रहे हो because यहाँ पे देखें जो भी नीचे आपके पास show हो रहा है that's going to be easier to read लेकिन ऊपर वाले के लिए आपको देखना पड़ेगा पहले टोटल क्या है उसमें से आप subtract करेंगे फिर you'll get an idea कि अच्छा ये नंबर क्या है exact ठीक है so it's not always very useful कुछ cases में you do it to sometimes save space as well and when you have a lot of categories तो इसमें number of bars reduce हो जाते हैं लेकिन most of the times what you'll actually need is bar charts that are clustered जो साथ साथ side by side show हो रहे हो उसके लिए आपको position argument में change करना है and you need to make it dodge instead ठीक है तो dodge basically क्या करेगा इन दोनों जो bars हैं इनको offset कर देगा such that they appear side by side so if you try to run this thing it's going to show you something like this and it's very similar to what you call a clustered bar chart or a clustered column chart when you make the same thing in Excel so this is now much easier to read as well आपके पास जो है values इस तरह से show हो रही हैं लेकिन remember by default ये आपको हमेशा क्या show कर रहा है counts show कर रहा है जब आपने सिर्फ इसमें एक x axis का variable दिया हुआ है right now let's say I am not only interested in the number of stores in each category I actually want to see कि अच्छा जब bad shelf location है और for example basically I want to categorize the data in the सर same इसमें हमने जिस तरह वाई एक्सेस को हमने खुद डिफाइन नहीं किया हुआ तो जिस तरह हमने पीछे एक्स एक्सेस का हमने नेम चेंज किया था उसकी हमने इंटरवल लेंथ डिफाइन की थी तो इसमें हम वाई की कर सकते हैं एक्स की तो हमने वैसे ही सेल्फ लोकेशन पे उसको डिफाइन किया हुआ तो है ही 3 तो yes एक जो हमारा yes काउंट है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमें इतने इंटरवल पे चाहिए उसके ब्लॉक्स yes you can still use this scale y continuous variable that will still work तो अब यहाँ पे for example अगर मैं यहाँ पे इसको run कर दूँ if I try to run this so in this case I can add this argument here और मैं इसमें y पे change करना I can change it to y continuous इसकी value में रखना label मुझे करना है let's say count आ रहे हैं तो this could be number of stores और आप ये लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट लेकिन एसेंशियली आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि आप ये कर सकते हैं उसको रन कर सकते हैं तो दिस विल वर्क तो काउंट को चेंज करके उसमें देखें नंबर ऑफ स्टोर्स कर दिया इसी तरह आप स्केल भी चेंज कर सकते हैं उसका दैट्स पॉसिबल ठीक है आप स्केल वाई कंटीन्यूअस यूज करना है आपको ऑलराइट सो in this case for example I've done exactly this here as well तो y continuous को तो मैंने change कर दिया I can also change what appears on as the x label here, the x-axis label here. So for that, I'll add another plus sign here, और मैं दूंगा scale x. But now remember, x-axis पे I have a discrete variable. This is not a continuous variable. This is a discrete variable, shelf location. इसमें change करने के लिए you'll have to use scale x discrete. So continuous की बजाय अब आपको discrete use करना पड़ेगा. And inside that you can say
you want shelf location instead of shelf block here. तो आप इसको run करेंगे, वहां पे भी उसको label change कर देगा and it's much more presentable now. ठीक है? Any questions on this? No, sir. All right. So let's try another thing. So let's say what I want instead of this is कि counts के बजाय मुझे यहाँ पे sales show करनी है. So within these same 6 categories, I want to see the sales instead. ठीक है, मुझे sales चाहिए. अब sales के लिए of course you'll also have to specify y variable here. आपको y axis के ऊपर क्या चाहिए? So I can specify here कि मुझे x axis पे तो shelf location चाहिए. Axis पे I need something else. Let's try this. Y equals unit sales. So मुझे y axis पे unit sales चाहिए. Everything else remains the same. And let's see what happens if I try to run this. If I run this, I see this error here. सर वो तो आपने कॉमा नहीं लगाया ना एक्स और वाई को डिफाइन करते हुए अच्छा चलिए वो तो that's another error. So let's try to run this. Okay, so now I get another error, and that is stat count must not be used with a y aesthetic. So basically geom bar के अंदर एक argument होता है that's called this stat argument. Stat argument. Default by default this value is going to be अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ. By default this argument is going to be equal to count. ठीक है, by default एक count होता है, लेकिन count कब आप use करते हैं? When you do not have anything on the y axis है. तो फिर आपको पता होता है कि जो भी number of rows हैं आपको सिर्फ number of rows count करनी है based on whatever values you have on the x axis है. अगर आप यहाँ पे y variable भी add कर देते हैं, for example in this case it was unit sales, तो अब count does not make any sense anymore. ठीक है, क्योंकि अब आपने यहाँ पे y axis पे तो कह दिया कि आपको unit sales चाहिए, तो count उसके साथ will not work. इसको आपको change करना पड़ेगा to another value that's called identity. Identity क्या करेगा? Identity is just going to show whatever you have put on the y-axis there. ठीक है, आपने ऊपर y-axis पे जो भी value डाली है that's going to show as it is here on the y-axis. आपको stat equals identity यहाँ पे input करना पड़ेगा because the default value was count in that case. So if I try to run this now, I see this result now. On the y-axis, I have the unit sales now. यहाँ पे इसका मैंने label change नहीं किया. I can change the scale y continuous label as well. Number of stores की बजाय I can change it unit sales. Y-axis पे तो आप I have the same thing, so that's fine. I have unit sales on the y-axis. Shelf location on the x-axis. और आपके पास ये clustered bar chart बन गया उस तरह से. ठीक है? So you can make bar charts like this as well. Any questions on this? Very Yes, sir. identity. सर हमने स्केल के आर्ग्यूमेंट सिर्फ लेबल चेंज करने के लिए की है. इस केस में हमने सिर्फ लेबल चेंज करने के लिए किया, लेकिन आप उसका वो भी कर सकते हैं. इसका स्केल फॉर एग्जांपल अभी 0 से 15,000 0 से ये अराउंड 17,500 तक आ रहा है. आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. दैट्स आल्सो पॉसिबल. और सर ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट देना, अगर सिर्फ लेबल चेंज करना तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? Let me try because I don't think it will even accept that. Yeah, it doesn't accept that because यहाँ पे देखें discrete value उसने use किया आपने x axis के ऊपर. You cannot use this function. उसको आपने देखें ggplot पे पता है कि आपने जो variable वहाँ पे input किया है that is discrete, so you have to use that discrete function there. Right. ठीक है सर.
Okay. Now, there's one other thing that I want to discuss today. Line graphs का भी हमारे पास data उसके लिए different use करना पड़ेगा because line graphs, remember, हम mostly use करते थे when we had time series data, when we had time on the x-axis. So we'll be using another data for that. And today we don't have enough time left. So what we can instead do is we can look at this thing called facet here. So let me change, move it up somewhere. Yeah, so let's do this. सर आइडेंटिटी वाला एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर देंगे कि हमने वो यूज क्यों किया था. Okay, so remember by default, what we see here is, okay, so by default, what we want to use here is, it was this function. So इसके अंदर देखें हमें सिर्फ इसके अंदर एक x axis पे input दिया था and that was shelf location, right? By default ये क्या होता है geom bar के अंदर you have this argument stat that is equal to count. This is the default in this function, stat equals count. ये use होता है when all you want is counts on the y-axis, कि आपको सिर्फ जो number of rows जितनी है data के अंदर वो count होके मिल जाए. But instead, let's say आपको y-axis पे count की बजाय कोई और variable चाहिए. For example, मुझे price चाहिए, unit sales चाहिए, or any other thing. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक तो y-axis पे जो भी आपको दूसरा वेरिएबल वहां पे शो करना है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस आई वांट टू शो यूनिट सेल्स देयर, और साथ स्टार्ट का वेरिएबल का आर्गुमेंट को आपको यहाँ पे आइडेंटिटी वैल्यू पड़ेगी, बिकॉज काउंट ओनली वर्क्स व्हेन यू डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स स्पेसिफाइड ऑन द वाई एक्सिस, बिकॉज का मतलब है कि आपको वाई एक्सिस पे काउंट शो करनी है. अगर आपने ऑलरेडी ये स्पेसिफाई कर दिया कि वाई एक्सिस पे आपको यूनिट सेल्स चाहिए, तो काउंट डज नॉट मेक एनी सेंस एनीमोर. तो आप आइडेंटिटी यूज करते हैं. आइडेंटिटी टेल्स ggplot टू कि आपने ऊपर y के अंदर जो भी इनपुट किया है, यू वांट दैट एज योर आउटपुट ऑन दैट. ठीक है, आइडेंटिटी हम यूज करते हैं कि y एक्सिस पे जब भी आपने इनपुट किया वही शो करते हैं आपको. डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. Okay, now one last thing for today, and that is these facets. Acha. So let's go back to that scatter plot. अब यही चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं इस केस के अंदर बार चार्ट्स के अंदर, but let's try that scatter plot for now. So अभी देखें, मैं सिर्फ ये ऊपर वाला रन कर रहा हूँ, the first two lines where I had this scatter plot. ठीक है, this is a scatter plot that I have. I don't have any colors applied to it or anything. It's just a simple scatter plot considering all values. जिसमें price or price x-axis पे है unit sales, y-axis पे है. Now, if I want to make any sort of comparisons between, let's say, how this trend is different when we are inside the US or outside the US, or when you have a good cell location, a medium cell location, or a bad cell location, आपने इन trends को compare करना है आपस में. One way to do this was to use different colors, and that would use this one same graph and apply different colors to it. For example, आप different shapes use कर सकते थे before. Now let's say आपको इतना trend वहां से clearly नहीं नजर आ रहा. What you want is कि आपको separate graphs show हो जाएं. For example, if you are inside the US, उसका एक separate graph show हो जाए. If you are outside the US, उसका एक separate graph show हो जाए, और आप उनको वो side by side show हो such that you can compare them. Let's try that. उसके लिए आपके पास ये एक function होता है facet grid. It's called facet grid. इसके अंदर you can generally give two arguments. So let me start with this.
So let's say मेरे पास ये तो original function था, I add another layer to it, I add plus sign, और मैं यहाँ पे function use करता हूँ facet underscore grid. Now inside this grid, if I do this, मैं first मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे dot डाल दिया. I'll explain to you what this means. यहाँ पे dot डाल दिया. Then I have this sign tilde. ये आप अपने keyboards पे देखेंगे. Escape के नीचे आ रहा होगा. You'll have to press shift and then press that button to get this sign tilde. And then I have US written. Let's try to run this and see what it gives us. So इसको मैं run करता हूँ. It's going to show me two graphs like this. And they will be shown side by ऊपर देखिए उनके labels आ रहे हैं no and yes और same y axis पे ये show हो रहा है. ठीक है, you're getting the same y axis for both of these graphs. और आप उनको compare कर सकते हैं आपस में. For example, देखें yes वाले case में you see the unit sales are generally they have a broader range. For example, most of the 2,500 until 12,500. In this case, however, जहाँ unit जो US के बाहर के stores, most of the stores are between 2,500 and 10,000. तो यहाँ पे आपके पास US के अंदर on average the sales are higher. इसी तरह आप US की बजाय यहाँ पे इसको अगर shelf location डाल देते हैं, you'll see 3 different graphs shown side this. आप उनको compare कर सकते हैं. The comparison is especially possible because देखिए आप same axis use कर रहे हैं y axis, same scale use कर रहे हैं y axis के ऊपर. अगर आप इनको different graphs बनाते हैं, उनका scales हो सकता है उन सब पे different होते हैं, उनको आप directly compare नहीं कर सकते थे इस तरह से visually. इसमें the comparison is easily possible like this. आप इनको तीनों cases को compare कर सकते हैं. Now let's understand what this tilde means. जो दोनों sides पे क्या है. तो right side पे हमने देखें first में dot लगाया, tilde के right side पे we said shelf location. तो whatever we have after this tilde sign, that's going to be shown in terms of columns. Whatever we have before this tilde sign, that's going to be shown in terms of different rows, multiple rows. So for example, मैं यहाँ पे dot की बजाय if I add US here, तो ये क्या करेगा, US को show कर देगा in multiple rows, and similarly shelf location को show कर देगा in multiple columns. If I try to run this command now, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, it's going to show me 6 graphs like this. सबको आपस में देखकर compare कर सकता हूँ. So in rows I have, so if I take it to a side, मुझे यहाँ पे show नहीं हो रहा. Yes, so in the first row I have stores outside the US, and the second row I have stores inside the US. And then in the columns, I have the first column showing bad shelf location, the second column showing good shelf location, the last column showing medium shelf location. And then I can compare all of these graphs together in this one single plot. Okay? You can do the same thing in bar charts as well, using scatter plots as well, and all of that is possible. Okay? So we'll stop here, and let me know if you have any questions on what we have done until now. No sir, lecture का time खत्म हो गया. Yes, so if anybody wants to leave, they can leave. If you have any questions, you can ask right now. Okay, sir, ये AES किस लिए होता है? So this is basically the aesthetics function. So हमने देखा start किया था, आपके पास different layers हैं. Aesthetics use होता है to basically assign some specific attributes to a variable. For example, आप ये assign कर सकते हैं कि अच्छा ये इस variable को आपने x axis पे रखना है, इस variable को आपने y axis पे. ये आपका position attribute होता है कि आपने x axis पे कुछ रखना है, y axis पे रखना है. Similarly, you can specify कि इस variable को आपने different colors से show करना है.
आपने एक वेरिएबल को डिफरेंट शेप से शो करना है, एक वेरिएबल को आपने डिफरेंट साइज से शो करना है. तो एस्थेटिक्स बेसिकली है कि आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स असाइन कर सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को. दैट्स व्हाई वी यूज एस्थेटिक्स. ठीक है. ओके. ज्योमेट्री जो है, जियोम फंक्शन जो है, दैट्स यूज्ड टू स्पेसिफाई कि आपने कौन सी विजुअलाइजेशन बनानी है. फॉर एग्जांपल, if you want a scatter plot, if you want a bar chart, if you want something else like that. तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ब्लाइंड चार्ट्स कैसे बना सकते हैं, व्हेन यू शुड यूज कलर्स, व्हेन यू शुड यूज समथिंग एल्स. कुछ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी आवर लास्ट क्लास ऑन विजुअलाइजेशंस, एंड देन विल मूव टू machine learning. So हमारा descriptive statistics, descriptive visualization, how to understand the data using by making tables and visualizations will be done, and we'll move on to doing actual modeling after that. ओके. Yes, any other questions? सर मैंने पूछना था कि क्लास के शुरू में आप कह रहे थे कि एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे. Yes, that's the latest update from HEC. They are going to be online now, yes. अच्छा, तो सर मैंने ये कहना था कि आज आपने देख ही लिया कि मैं क्लास के शुरू में कितना वो डिस्कनेक्ट हो रहा था, फिर कनेक्ट हो रहा था. तो Yes. हाँ, तो अगर ये सिचुएशन हुई एग्जाम्स में तो फिर तो काफ़ी डैमेजिंग नहीं होगा इंटरनेट इशू की So वजह we से? are, we are actually discussing something like this to basically, there's certain limitations now. For example, the exam will most likely be open book now. So we have to consider that, and we have to consider the connectivity issues that students have as well. Those के लिए probably the time is not going to be limited like this. We might give like a 10 to 12 hour slot जिसके अंदर आपको एग्जाम करना होएगा. So but none of this is confirmed for now. अभी हम ये discussion चल रही है, and you will get to know about this sometime soon. सर ये कंफर्म डिसीजन है एचईसी का, क्योंकि ये अभी ज्यादा जल्दी नहीं उन्होंने डिसीजन कर लिया, अभी तो कुछ एक माह वेट कर सकते थे इससे पहले, क्या पता कंडीशन बेहतर हो जाए. I don't know. This is the latest update we have. We don't know if this is a final decision or not. That तो they जो might decide to 31 मई change तक it. की बात थी वो लेकिन जी वो पहले तक की पहले की अपडेट थी. अब recent अपडेट ये है कि there is almost no probability of the educational institutions being opened very soon. तो फिर most probably अभी online ही चलेगा. तो उसके लिए फिर कॉन्वोकेशन भी हमें कॉन्वोकेशन तो ऑनलाइन प्रॉब्लम नहीं होगी. you'll have to wait to get your degree then I guess. लेकिन कॉन्वोकेशन तो वैसे भी मेरे ख्याल है फरवरी में होती है, या इनफैक्ट या फरवरी मार्च में होती है ना. यस. तो तब तक तो दुआ करें कि हो जाए सब कुछ सही. तो और तो सर कुछ नहीं कर हमारे सकते. सीनियर्स की भी होनी थी, अब उनका भी गया, और अब जो हम मैं सेमेस्टर 8 वाले उनको भी नजर आ रही हैं चीजें अब. लेकिन you'll most likely, I think you should get your degrees anyway. सिर्फ कॉन्वोकेशन वो यस. एक सेरेमनी डिले होगी, लेकिन आपको डिग्री तो प्रॉब्लम मिल जाएगी. यस. PDF That's just what I think. Let's hope कि ऐसे सब कुछ सही हो. Yes, anyone else? सर मुझे मेरे क्वेश्चन है इनर जॉइन पे. अच्छा, just give me one minute. So Zainab, the recordings are already all uploaded. 16th की भी uploaded है, जो हमारी last class का वो ये 20th को वो भी uploaded है. All recordings are uploaded. सर 16th की नहीं अपलोडेड, 13th अप्रैल की है, उसके बाद फिर 20th अप्रैल की है. नहीं 20th की 16th की भी है वहाँ पे. अच्छा सर let me 16th की डिलीट वीडियो लिखा आया था, डिलीटेड वीडियो. okay, so let me check right now. अच्छा ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ साथ साथ. अहम आप बताएं. सो इनर जॉइन पे क्वेश्चन था कि जो हमारी सेकंड आर्गुमेंट होती है उसके अंदर बाय आर्गुमेंट जो होती है उसके अंदर हम Yes. I am sorry, I can't hear you.
अरहम आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही फिर ये हो जाता है फिर इंटरनेट को। हाँ, that's why I chose to अरहम keep कहता है all the उसका सही videos चलता off as well. लेकिन Arham, we can't hear you. We can't hear anything what you're saying. You can probably write it down in the chat box. In the meanwhile, I'll answer Talha's question. अरहम ईमेल कर दो यार प्लीज। Acha, anybody who wants to leave, they're free to leave. The class is ended. I'm only here to answer questions now. ठीक है? So, सर आपकी आवाज कट गई थी पहले, आप क्या कह रहे थे? Arham आपकी कट गई थी, आपकी कट गई थी. That was the issue. ये बताएं. Arham, you're gone again. सर उसकी हाँ यही यार, है कि उसमें सर इनर जॉइन में जो सेकंड स्टेटमेंट होती है बाय से, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, हमें वो किस तरह पता लगता है? आपने बेसिकली देखना है कि दोनों टेबल्स के अंदर किस कॉलम के ऊपर आपने मैच करना है. सो फॉर एग्जांपल आप जिस तरह वी लुकअप लगाते हैं ना कि आपने इस टेबल के अंदर से ये वैल्यू जाके दूसरे टेबल में सर्च करनी है. दैट्स बेसिकली द फंक्शन ऑफ दैट बाय आर्गुमेंट कि आपने किस वैल्यू की बेसिस पे मैच करना है. आपने बताना है ना कि जहां पे यहाँ पे 1 और 1 मैच कर जाए तो आपने वो वाली रो को उठा लेना. तो दिस इज जनरली गोइंग टू बी अ यूनिक कॉलम जहां पे एक टेबल के अंदर एटलीस्ट यूनिक वैल्यूज होंगी उस कॉलम के अंदर. बाकी सर उसके अलावा फिर जो अंदर हम स्टेटमेंट डालेंगे और जो हमने दो कॉलम से कॉलम नेम देना है, वो पहला जो होगा वो पहला दूसरे टेबल में से होगा कि पहले उससे फर्क पड़ता है? नहीं, दैट डजंट मैटर. आपने एक इक्वालिटी का साइन ही डालना ना, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं है. यू कैन डू इट अदर वे. अच्छा, तलहा हैज अ क्वेश्चन. car seats underscore df y equals unit ratio. What does this show? अब इसको रन करके देख लें क्या शो होता है. सर एक्चुअली आपने जो करवाया था ना, इसमें शेप और जो पहले वाला एस्थेटिक है, इसमें शेप और कलर नहीं था, तो वो एक एक लाइन आ रही थी सबके लिए. लेकिन जब मैंने ये शेप और कलर ऐड किया इसके अंदर, तो उसने डबल डबल लाइंस शो करनी शुरू कर दी. इसलिए मैंने कहा कि ये क्या है, मुझसे कोई गलती हुई है या ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है? Color, shelf location, geom, smooth shelf location, shape us alpha सही है, method lm. 2 लाइंस शो कर रहा है. हाँ जी सर, आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते सर हैं, काम इसमें करेगा. एस्थेटिक दो सर वो क्यों लगाए हुए हैं इन्होंने? कलर 2 दफा उन्होंने दिया हो रहा। नहीं, ये वो हमने किया वो है, लेकिन ये फर्क है. अच्छा, let me try this here. So यहाँ पे नहीं आ रहा जो मैं किया था. अच्छा, let's try this. अच्छा, तो इसमें इशू ये आ रहा है कि we are getting multiple lines. अच्छा, जियोम पॉइंट यूज हुआ है, कलर उधर है, शेप इज यूएस, एलएम कलर शेल लोकेशन, दैट इज फाइन. कलर उसको क्या है, ये जियोम पॉइंट का अगर आप कलर उठा के ना, इसको ऊपर वाला कलर उठा के उसमें डालें and see if that helps. उसके अंदर नहीं आ रहा है. इसने क्यों नहीं डाल रहा है?
Let's do without this, for example. इसमें क्या इसमें भी we're getting two lines. इसमें भी same issue आ रहा है. Standard error. सर शेप को मिटाएं जरा. Probably ना shape argument भी उसमें शायद वो shift कर रहा है. Because ये ऊपर जो ggplot में जो आप arguments लिखते हैं ना, they apply to all the layers. और फिर नीचे जो आप specific उसके अंदर जो arguments, aesthetic arguments लिखते हैं, they only apply to that specific geom. अगर इसको भी हम हटा, लेकिन that's not going to be a problem, क्योंकि वो तो हमने US पे किया हुआ है ना apply, तो वो तो issue नहीं होना चाहिए. लेकिन अच्छा shape अगर ये चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज डाल कर रही देते थी हैं. कि ये फिर अप्लाई किस तरह हो रही है. अच्छा उसमें नहीं डाल सकते. I can try this. Color works fine. शेप में मसला आता है कि वो नीचे भी ले जाता है उसको. So this is what we did, right? हमने दोनों को कलर्स में किया था. हमने पॉइंट्स को भी कलर्स में किया था और लाइंस को भी डिफरेंट कलर्स में शो किया था. शेप की वजह से इश्यू ये आ रहा है कि उसको नीचे लेकर जा रहा है वो. अच्छा यहाँ पे शेप का डिफॉल्ट अगर कुछ और करें, यहाँ पे अगर यूएस डालें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे यूएस नहीं मिल रहा उसको भी. सर शेप ऊपर से एएस एस्थेटिक के अंदर नहीं आएगा. सॉरी यस. अच्छा मसला फिर यही है कि इसकी वजह से आ रहा है शेप, जब उसके स्मूथ के शेप आर्गुमेंट जो है ना, वो स्मूथ के अंदर डालने से वो एक वो कलर की वजह से डिफरेंट लाइंस बना देते हैं और शेप की वजह से डिफरेंट लाइंस बना देते हैं. अच्छा अगर मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ शेप इक्वल्स यूएस, देन इट वर्क्स. सो देखिए अगर आपको ये शेप आर्गुमेंट जो है ना, दैट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स विद द स्मूथ फंक्शन. स्मूथ फंक्शन में वो शेप के लिए अलग से लाइन बना रहा है और वो स्मूथ फंक्शन अपनी भी एक लाइन बनाता है. वो तो उसके अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, तो वो फिर मल्टीपल लाइंस बन जाती हैं. अगर आपको शेप इनकॉर्पोरेट करनी है ना, तो शेप को आप क्या करें, आप इसके अंदर भी डाल दें. सर सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था, आप रिपीट कर दें प्लीज. अच्छा सो बेसिकली जो स्मूथ फंक्शन है ना, स्मूथ फंक्शन बाय डिफॉल्ट इसकी ये क्या करता है, इसने एक लाइन बनानी होती है, राइट? जी. अब आप उसमें एक शेप आर्गुमेंट भी उस स्मूथ फंक्शन का डाल देंगे, तो इसका मतलब है कि वो हर यूएस, आउटसाइड यूएस और इनसाइड यूएस के लिए, उनके लिए भी अलग अलग लाइंस बनाएगा. तो शेप आर्गुमेंट जब इस पे अप्लाई होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, इफ आई डू दिस हियर, शेप इक्वल्स यूएस, नाउ व्हाट दिस डज इज कि एक तो जियोम स्मूथ आपको 3 लाइंस दे रहा है बेस्ड ऑन द डिफरेंट कलर्स, राइट? अब आप ये कह रहे हैं कि यूएस की बेस पर कि वेदर दिस इज इनसाइड द यूएस और आउटसाइड द यूएस, आप 2 डिफरेंट शेप्स भी बनाएं बेस्ड ऑन यूएस. तो वो क्या करेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल 6 लाइंस उस वजह से दे रहा है कि आउटसाइड द यूएस और इनसाइड द अलग अलग लाइंस शो कर रहे हैं. दैट्स द इशू है. और जब मैंने शेप ऊपर जीजी प्लॉट में दिया हुआ था, ओके सो तब भी जब आप यही ऊपर फीड हो डाल, रहा था. यस, तो बेसिकली जब आप ऊपर आप कोई भी चीज डालते हैं ना जीजी प्लॉट के अंदर, दैट्स अ ग्लोबल आर्गुमेंट,
ठीक है, ग्लोबल Right, आर्गुमेंट ग्लोबल वेरिएबल की तरह ना वो नीचे हर एक पे अप्लाई होता है। जब आप नीचे कुछ डालते हैं जियोम फंक्शंस के अंदर, दैट्स अ लोकल आर्गुमेंट, वो सिर्फ उसी जियोम के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक हो गया। सो दैट्स द डिस्टिंक्शन। जब आप शेप ऊपर डाल देते हैं तो वो ऊपर नीचे सब चीजों में अप्लाई होता है फिर वो, दैट्स द इशू, राइट? Right, thank you, ओके, sir. एनी अदर क्वेश्चंस? सर अभी वो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो अभी होना है कि अब वो नहीं होगा, क्योंकि अब हम उसको किस तरह करेंगे? प्रोजेक्ट होगा और प्रोजेक्ट की probably अब और बढ़ जाएगी बिकॉज फाइनल की वेटेज कम हो जाएगी, तो सर तो फिर आप प्रोजेक्ट होगा। एक सिर्फ डेटा अगर प्रोवाइड कर दें अपने से, क्योंकि डेटा जो है वो इस तरह नहीं मिल रहा इसके लिए, क्योंकि आर Yes, स्टूडियो so के ऊपर और I'll होगा। yes, so I'll basically give you some resources जहाँ से आप कर सकते हैं डाउनलोड। I'll also give some recommended data sets। उसके अलावा 2-3 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ना काफी सारे डेटा होते हैं। Kaggle is one source और वहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा सेट्स मिल जाएंगे। You can, if you want to use your own data, you can go there and search for one। Otherwise मैं कुछ recommended data sets भी दूंगा, लेकिन I plan to the project guidelines soon। लेकिन अभी जो दरमियान में एक और अपडेट आई है उस पर मुझे लग रहा है कि मुझे प्रोजेक्ट की परसेंटेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए we might need to add something to the project as well, so it might take some time to come up with that project guideline। और फिर ऑफ कोर्स उसके हिसाब से डेडलाइन भी फिर थोड़ा सा आगे जाएगी, so that's not an issue। yes, चलें ठीक है सर, चला। क्योंकि वो यही अगर आप उसकी गाइडलाइन या हमें वो डेटा दे दे तो वी कुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ये एक दिन में होने वाला काम तो है नहीं, इस पे टाइम yes, लगेगा, तो वो इस वजह से कह of रहे थे। course, yeah, sure। तो अभी हमारी कल एक मीटिंग है, उसमें some things will be decided and regarding how our weightages across different components will change, तो उसके हिसाब से फिर I will update that। any other questions? तला आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, I can't hear you। की आवाज नहीं आ रही, you'll have to say that again। okay, any other questions? तलहा का probably disconnect हो गया। any other issues? yes, Talha। okay, I think we'll stop here because most like Talha का कोई और issue हो गया, so if you don't have any other questions, we'll stop and end this class here। okay,